Dear students, I, Mr. Vishal Shah, Assistant Professor, Krishna Institute of Pharmacy, Karad, once again welcome you all to this my YouTube channel. Now, first, I will take this opportunity to congratulate you for securing your admission to the B Pharmacy course. Here, in this video, we will be discussing about the introduction to pharmaceutical analysis. As you are coming first time to this my YouTube channel, if you like the content of this my channel, then I request you can like my videos, share with your friends and subscribe to my YouTube channel. Now, before starting with our today's session, before that, just we will see what are the learning outcomes of this session. Learning outcome means what? What you should understand after watching my videos or my lecture. So things that you could understand after watching my videos, or after this session, all the students will be able to explain various subjects in semester 1, understand the pharmaceutical analysis 1 subject, explain various chapters in pharmaceutical analysis 1. So in this video, just we will be taking the introduction related to our syllabus, which are the different chapters that are present in our syllabus of pharmaceutical analysis 1. So to take the overview of the whatever the subjects that are present in our first sem, just I have made this particular slide where just we will see which are the different subject that you are going to study in this semester 1 of the PCR syllabus. So first subject that you are going to study is Human Anatomy and Physiology 1. Then Pharmaceutical Analysis 1, Pharmaceutics 1 and Pharmaceutical Inorganic Chemistry. So here I will be dealing with the videos related to the Pharmaceutical Analysis 1. So these are the 4 various subjects that you are going to study in SEM 1. These are the core subject. Few other subjects are there which are applied subjects that I am not including over here. Means यहाँ पे इस सेमिस्टर में आप 4 सब्जेक्ट स्टडी करने वाले हैं. उसमें से जो सब्जेक्ट दैट आई विल बी टीचिंग यू इज फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1. So now when you heard this particular subject, means जब आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इस वर्ड को जब सुनते हैं, what are the different things that comes into your mind? Obviously you have to understand what is the meaning of pharmaceutical analysis. Now if we say this pharmaceutical analysis word, means अगर मैं बोलता हूँ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वर्ड, बेसिकली दिस वर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और वी कैन ब्रेक अप दिस वन वर्ड इनटू 2 पार्ट. One is pharmaceutical, other one is analysis. Now before understanding what is the meaning of pharmaceutical analysis, just we will understand first the analysis. Now to understand this analysis, just you can think the situation. यहाँ पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब क्या है. अगर हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब जानना चाहते हैं तो पहले इस वर्ड को हम ब्रेकअप करते हैं इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन, पहला है जो फार्मास्यूटिकल और दूसरा है एनालिसिस. अब हम फर्स्ट एनालिसिस मीन्स व्हाट, एनालिसिस का मतलब क्या है ये जानते हैं. नाउ आप एक सिचुएशन इमेजिन कर लिए. अगर रेगुलर क्लासेस चालू होते तो व्हाट विल बी द कंडीशन? यू विल बी इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल बी कंडक्टिंग फिजिकल लेक्चर्स. नाउ जब भी कोई टीचर फर्स्ट क्लास को
क्लास में आता है, what you could see, just what things comes into your mind. You start to staring at teacher, how it looks, what he is wearing, whether he is strict or not, whether just you are trying to analyze what is the behavior of that teacher. This is known as the analysis. So you try to judge that particular teacher, how he is behaving, whether it is strict, how many classes that you can bunk of this teacher or not. So these are the things. This is nothing but the analysis. But this analysis, ये जो analysis आप करते हैं, it is related to your teacher. It is related to the person. So analysis का मतलब क्या है? Just observation of something. Maybe its color, appearance. So these are related to the one person. But in case of pharmaceutical analysis, we will be carrying out the analysis of different pharmaceutical products, like say tablet, capsule. This analysis may be in terms of appearance, like for the color, then odor, how it looks like, shape, or in terms of certain different tests that are used for the analyzing the content. यानी कि क्या, जब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस ए वर्ड बोलते हैं हम, तो हमें क्या करना होता है उसमें और क्या स्टडी करने वाले हैं. आपने वेरियस टैबलेट्स, कैप्सूल, पिल्स, लिक्विड से डोसेज फॉर्म रेगुलरली देखे होंगे. तो इसमें जो कंटेंट है उसका शेप क्या है, उस टैबलेट का वो कलर कौन सा है, वेरियस कंटेंट उसमें क्या क्या है, जो स्टडी किया जाता है, उस सब्जेक्ट को हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बोलते हैं. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द एनी ड्रग, बिकॉज एज वी नो दैट ड्रग्स आर रिलेटेड टू द health of that particular person. Means drugs are used to improve the health of that particular person, whoever is consuming that. So as it is related to the life of that particular patient, we have to take major precautions that that drug does not produces any side effects. जो भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसे बनाने में बहुत सारी प्रिकॉशंस ली जाती है, जिससे उसका कोई हार्म उस पेशेंट पे ना हो. सो और ये हार्म पेशेंट पे नहीं होना चाहिए, उसके लिए वी आर कंडक्टिंग वेरियस टेस्ट, एंड दिस टेस्ट आर performed in pharmaceutical analysis subject, and these tests that we are going to study in the pharmaceutical analysis. Now just we will see what is the definition of this pharmaceutical analysis. The pharmaceutical analysis is a branch of chemistry which deals with the process of or the sequence of processes to identify or to quantify. Here these two words are very important. One is the identify, means आपको जानना है उसमें कंटेंट क्या है, और उसको क्वांटिफाई करना है. यानी कि आपने अगर कोई भी टैबलेट की, से फॉर एग्जांपल क्रोसिन की जो स्ट्रिप होती है, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो उस पर लिखा होता है पैरासिटामोल, दिस इज द ड्रग. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दैट टैबलेट इज कंसिस्टिंग ऑफ पैरासिटामोल और नॉट, एंड क्वांटिफाई मीन्स उस पर लिखा होता है पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम. सो आपको चेक करना होता है कि उस एक टैबलेट में 500 मिलीग्राम ड्रग है या नहीं. सो दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई अ सब्सटेंस और अ ड्रग. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. Then the component of pharmaceutical solution or a mixture or a determination of structure of chemical compound that is used in the formulation of pharmaceutical product. So this is the definition of pharmaceutical analysis. So this is nothing but the branch of chemistry. Mainly it is dealing with the process that is used to identify or quantify a substance or a drug. The component of pharmaceutical solution, because there are various forms of the drugs are available, like as I have shown here in your figure, which are having various shapes.
So these are nothing but the solid dosage form, which are tablet, capsule. Then also we are dealing with the mixture of the various pharmaceutical solutions, the determination of structure of chemical compound. ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज कोई भी अगर मेडिसिन हम लेते हैं तो सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए, बिकॉज whenever we are taking that medicine from the mouth, still if we want the action in the brain, means यहाँ पे हम मेडिसिन मुंह से लेते हैं, लेकिन हमें अगर ब्रेन में भी एक्शन चाहिए तो वहाँ पे वो एक्शन प्रोड्यूस करता है. इट इज ड्यू टू द ब्लड सर्कुलेशन. फ्रॉम स्टमक दैट ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इन अवर बॉडी, and from that point it will be circulated to the whatever the parts that are present in our body, and when that drug reaches to that part, then it will produce a certain action. Also paracetamol, जो generally it is used as a antipyretic, जो बुखार कम करने के लिए काम आती है. So why only paracetamol shows it that action? So it related to its structure. आपको बेंजीन मालूम होगा, C6H6, उसका स्ट्रक्चर होता है 6 कार्बन एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द वन रिंग. सो सिमिलरली every compound is having a specific chemical structure, and the pharmacological action means कौन सा इफेक्ट होगा, it depends upon the chemical structure. So we are also dealing with the study of that chemical structure. Now if you look into detail of our pharmaceutical analysis theory syllabus, then basically it consisting of the 5 units which we are going to study. Now before starting with these units, just we will see what is the scope of this pharmaceutical analysis subject. This course deals with the fundamentals of analytical chemistry and principles of electrochemical analysis of drug. फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स व्हाट? एनालिटिकल केमिस्ट्री यही भी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स का स्टडी होता है. सो दिस कोर्स इज डीलिंग विद द फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस. नाउ वी विल सी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड स्टडीइंग दिस कोर्स और सब्जेक्ट. Upon completion of the course, students shall be able to understand the principles of volumetric and electrochemical analysis. So यहाँ पे हम 2 important techniques study करने वाले हैं in this chapter. एक है principles of volumetric analysis and other one is the electrochemical analysis. Then carry out various volumetric and electrochemical titrations. तो जो वॉल्यूमेट्रिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशंस है वो किस तरह से हमें करने हैं, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, वो हम स्टडी करने वाले. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट यू शुड बी एबल टू गिव दिस पर्टिकुलर और यू शुड अचीव दिस 2 ऑब्जेक्टिव. जैसे मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में जो लर्निंग आउटकम्स आपको बताए थे, यानी कि ए लेक्चर देखने के बाद आप क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, वैसे ही इस सब्जेक्ट के बाद what you could understand that we are going to study in this particular subject. Also to develop the various analytical skills, this is also objective of this pharmaceutical analysis 1 theory. Now just we will go to the course content. जैसे मैंने बताया, this subject is divided into the 2 parts. One is the volumetric analysis and electrochemical analysis. Or this subject is having 5 different